My name is Adnan Sagheer. I am the volunteer coordinator at Dosti Welfare Organization. Dosti has initiated a campaign called Mera Ghar, Mera School, in which about 1,000 whiteboards will be distributed among the community in KPK. So far, we have distributed about 379 whiteboards. More than 1,500 people have benefited from this campaign so far. The next phase of distribution is in Mardan, where about 40 whiteboards will be distributed in the community. So let us take you over there. Let us show you how it's made, and then you can see the ground action. Hello everyone. Today we are here in a village called Velasa. It's a village in Mardan. We have met some of the local volunteers who have applied for whiteboards. So Dosti decided to answer their call. We are very happy to see that about 40 whiteboards have been distributed. More than 200 students will benefit from this program. It is the need of the day. Education needs a rescue, and Dosti is here to help. So we are giving city by city whiteboards. First we did Charsada, then Mardan. Now it's some of the other cities which we will go to and distribute whiteboards. Our main aim is to rescue education. Come, help us. Join hands with Dosti and rescue education. I am educator Sohaib Shinwari, and I belong to Shankar area. The ratio of education is very low over here in our area. Mostly this is a rural area. So the people are uneducated. Most of the people do not send their children to schools, and especially in these days, students do not go to schools. So in that regard, we came to know about the Dosti organization, and we applied for the whiteboard distribution, and today all the people of our locality got the whiteboard. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ है। मैं तंजीम तामीर नोजावान का प्रेसिडेंट हूँ। हम यहाँ पे बच्चों को इस कोविड-19 में अपने गाँव के बच्चों को फ्री ट्यूशन क्लासेस पढ़ाते हैं, और हमारे साथ तकरीबन 80 स्टूडेंट्स हैं। हम दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इस हालात में सपोर्ट किया, हमें वाइट बोर्ड फराहम की, क्योंकि ये हमारी वक्त की ज़रूरत थी। और मैं सबसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अपने घरों में बैठकर अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनका मुस्तकबिल रोशन करें। मेरा नाम जवाद खान है और मैं अब्दुल खान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज वाइट बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी जो कि दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िद की गई थी। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे बच्चों को तालीम में शदीद मुश्किलात का सामना है, तो घरों में बेहतरीन क्लासेस का माहौल फराहम करने के लिए हमें वाइट बोर्ड की अशद ज़रूरत थी, जो कि दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें फराहम की गई थी। मेरा नाम फवाद अहमद है, हम वॉलंटियर। हमें वाइट बोर्ड की ज़रूरत थी, इसलिए दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने हमें वाइट बोर्ड प्रोवाइड की। मेरा नाम अहमद अहमद है, मैं APC का तालिब इल्म हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से सारे मुल्क के तालीमी इदारे बंद हैं, बच्चों की तालीम जो है वो सख्त मुतासर हो रही है। इसलिए हमने दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट की कि उन्होंने हमें वाइट बोर्ड प्रोवाइड किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मेरा नाम ओसामा खान है, मैं इल्हाम कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए वाइट बोर्ड फराहम की।